Hello, hi, namaste, salama. Welcome to Anuj Kumar IND. And today we'll be starting with a new chapter, and we will be completing this chapter in this video only, right? So, before starting, please like the video, and we are aiming for 15 likes on this video, as it takes a lot of time to complete a one chapter in a single video. So please like the video and share this video to your near ones, dear ones, or anyone around you. And if you have any suggestions or any doubts, please comment down below. And most importantly, subscribe the channel, right? And the lecture notes are given in the description. So if you want to look out that what all we have taught in this chapter, so you can browse the notes in the description. These all are the lecture notes, what all we are been teaching in this lecture, right? So we will be covering the chapter determinants as I told you yesterday. So we'll be covering the whole chapter determinants in this particular video only. So without wasting any time, let's begin with the chapter. So determinants. So here you can see some numbers in a straight line bracket, and here you can also see some numbers with a bracket and having this line with them, right? So this bracket and numbers are determinants basically, and this is matrices. Now many of you may have a misconception that determinants or matrices are something in same. No, that's definitely wrong. इनके अंदर कुछ सिमिलैरिटीज़ होती ही नहीं है. फिर ये सिलेबस बुक्स इनको साथ रखती क्यों हैं? सिर्फ इसलिए कि कुछ चीज़ें इनका लिखने का स्टाइल हो गया कॉमन, या फिर इनके आप जैसे अरेंजमेंट्स हैं ये कॉमन हो गए, सिर्फ इसके लिए. और इनमें ना कोई इनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग में कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, कुछ भी नहीं है, सब अलग है. दे बोथ हैव डिफरेंट फंडास फॉर बोथ ऑफ देम, नो कनेक्शन बिटवीन देम. अंडरस्टैंड? सो let's start off with the chapter. Now we'll be dealing with certain fundas, and that fundas will be denoting by F, right? So the funda 1 itself says that determinant and matrices have no connection. ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोनों में, कुछ फ़र्क है ही नहीं, मतलब बहुत फ़र्क है दोनों में. They don't have any similarities between them. So what basically is the difference? Let's understand that. See, I have an equation which is like this: ax plus by plus c. Sounds good. Another equation, px plus qy is equals to r. This is not plus c, this is equal to c, right? So to solve this equation, we have learned in class 10 that we can eliminate this, we can eliminate this, right? So for eliminating, what we have to do, we have to multiply their number in their equation, in the another equation. Like we'll be multiplying p here and a here. Very simple. So it becomes pax plus pby, apx, aqy is equals to pc is equals to ar. And I have pre-written slides in them, so that we can save time and we can complete in limited time. So when we solve it, it gets cancelled, and we have here y in common, and pb minus aq is equals to pc minus ar. Now this particular equation, this is the determinant. How? Let's see. So basically, as I have told you above, that determinant is this structure, and we can write this pb minus aq as pa bq. Now how this and this are equal? So what determinant says? Determinant says that multiply p and q and subtract it from the product of b and a. So it is like this: pb pa minus pq minus AB. Understand? PQ minus AB. Now here we have some difference in letters, that doesn't matter. You can understand that it is simple. We just have to multiply P by Q and with A and B, and then we have to subtract their product. Now it is very important that you give minus sign to the bottom one, right?
and in the number which is at the left, at top left, it is given the positive sign. Understand? This should be in common, and this should be important to solve problem correctly, right? So determinant was basically made to make the heavy equations which are in the very high power, like power 6, 7, 8, in a very concise manner, to write in very concise form, right? To basically to rectify the answer, we can write that determinant was just made to rectify the answer. How this statement is eligible, you will understand with the concepts forward, right? So now, as I have told you that they don't have any similarities in matrices and determinants, let's see how they don't have any similarities, right? See, when we talk about matrices is basically a table of data. How? Suppose I have a rank list. And it seems something like this. And here are the marks of physics, chemistry, maths, and here are two students, S1, S2. Now S1 have scored 10 in physics, 8 in chemistry, 7 in maths, and S2 have scored 8 in physics, 7 in chemistry, and 6 in maths. So we can write this same thing as like this, like 8, 10, 8, 8, 7, 7, 6. This is matrices. It is a table of data, and that table can be, as I have explained to you, that this can be rank list, scorecard, anything, right? This is matrices. This table is called matrix. This is called matrix. Understand? So I can explain you that how they are different. Let's move forward. See, suppose I have to multiply a determinant by 2. So it is 3. So this is a determinant 3, 4, 5. So first I can solve it. This is 15 minus 8, it is 7, and multiplied by 2 is equals to 14, right? Now I can write this like in one more way, that I multiply 2 in the first row, then also the answer will be same. How? See, 6 multiplied by 5 minus 16, this is also 14. But in determinants, in matrices, if I write like this, if I multiply, suppose this is a rank list and this is 10, 8, 8, 7, is it possible that I will double the marks of a single student? It is important that I multiply marks of both the students, right? So in matrices, the 2 will be multiplied by all the elements in them. Understand? And in determinants, we can multiply in the row, in the column, in the row, anywhere. Understand? Now next funda, how to expand a determinant, right? So suppose now we'll be taking a determinant of order 3. What is order 3? I'll be explaining you. This is A, B, C, P, Q, R, S, T, U. Understand? So how we will be expanding this determinant? So it is very simple. So, this is row and this is column. Understand? So what I have to do is, to expand this determinant, I will take this element A
and I will hide its row and column and will solve this determinant. So it will be appear like this: A multiplied by QR TU. I will highlight it. It will this will be for A. Now for B, we will hide its column and its row, and we will multiply B by the elements which are left after hiding their row and column, that's PS and RU. So it will be minus, and it is very important when you write in determinants, the first one will be always positive and the second one will be negative, and then again positive, then again negative, then again positive. So it's a cycle, right? So B multiplied by PRSU, ठीक है, plus C. Now for C, what will happen for C? We will hide this and this, and we will write PQ and ST. PQ ST. Okay. This is how we expand a determinant. Understand? So when I will solve it, it will appear like this: A multiplied by QU minus RT, that's great, minus B into PU minus RS, plus C into PT minus QS, and it will be A QU minus ART minus BPU plus BRS plus CPT minus CQS. So that's how a determinant is expanded and opened. Understand? This is very simple. Let's move forward. So let's have a problem. It's very simple. You can multiply 3 and 2 and subtract it from 7 and 4. So 6 minus 14 is equals to 4 minus 8. Oh, 7 4 it's 7 multiplied by 4, 28 is equals to minus 22. And here, what can we do here? We can simply, now we can do mind calculations. Hide 1, and it's 1 multiplied by we have to hide this, 9 into 5 minus 8 into 6 minus, we can hide 2, four into 9 minus 7 into 6 plus 3 into 4 into 9 minus 6 into 4 into 8 minus 7 into 5. So this is 45 minus 48, 3 minus 3, and here it is 7 6 is 42, 36 minus 42, it's minus 6 plus 12, and here it is 35, this is 32 minus 3 into 3 minus 9, so it becomes 0. Very simple. Now a very important concept coming up, right? So as you can see that we can write here, I will make ABC PQR STU, and I can write this one as I have told you earlier that I can write as a AQ minus ART minus BPU minus BRS minus plus CPT minus CQS.
It's quite simple, right? So I can write like this now, and I have written this by taking a b c, right? So now can I take the elements of s common, so it will be appear as, we can take s common and it will be dr minus c cube plus minus, then we can take t, and what all elements are with t, there are art and cpt, so we can take t outside and it's something like ar minus rs, ar minus cp. ar minus cp plus, then we can take aqu, we can take u and bpu, so we can take u out and it will be aq minus pb. Understand? So now can I write this one in determinant form? Of course I can write. So this is stu, this is stu, this is pqr, this is abc, and as you can see I have written the whole determinant, with the bottom row, so here we can understand that expanding of the determinant can be done with any of the rows, like I have done with the bottom row. Understand? I have done with the bottom row. Let's make it with dotted lines. It's quite simple. Now moving forward, so there are further rules of expansion that we have to understand, right? There are further rules of expansion. The first rule is expand about any row or any column. So you can expand about rows or column. The only thing that you have to keep in mind that when you are taking, suppose you are taking this one, so you have to hide its row and its column. If you are taking this one, hide its row and hide its column, and most importantly multiply that number from which you are hiding. This is very, very important. Next point, use alternate plus minus signs before any element which comes before the smaller determinant. Left top is always positive, so I will explain you this. So this is the main theme. So like the determinant starts with the left top is always positive, then you have to make a chain, minus plus minus plus minus plus minus plus. You can go with plus minus plus minus plus minus plus minus plus. It is all alternate, you don't have to do anything. We can break this down like this, minus 4 and 2 3 8 9 plus 5 1 7 3 9 minus 6 1 2 7 8. Moving forward, so let's expand this determinant from this row. Let's expand. So let's take 3. Let me mark this row. So 3. So how we will be expanding the 4 cross 4 determinant? We have to do nothing, just like we have done in 3 cross 3. So we will hide this and we'll write
the determinants. We will hide this and we will write the determinant in the 3x3 form. How? Let's see. We have taken 3 and so we will hide this and this, so we have remained with this. So it's simple, let's fill it out. 4 2 4 2 6, then 3 0 3, and then 5 7 0. Quite simple. Again, minus 1. Hide the column and row and write 1 2 4 2 0 7 6 3 0 plus 1 and 1 2 4 4 3 5 6 3 0. Add one more, minus 1 minus 2 1 2 4 4 3 5 and 2 0 7. Done. Now let's evaluate. So here you can understand that the bigger the determinant, the bigger the expansion, the more difficult it becomes. So we will have some properties, some rules, laws to make the problem easier. So meanwhile, let's expand this. It will become sine squared theta minus cos squared theta. What it will become? It's very simple. You can hide this. So 1 multiplied by 10 into 6 minus 7 into 7 minus 2 into 5 into 10 minus 7 into 8. We have to be hurry as we have to complete the full chapter in this. And then plus 3 5 into 10 minus 7 into 8. This question we will break it and let's expand this from this. No, what the intelligence is that we should expand from this. As there are 3 zeros, it will all become 0. So we have to hide this and this. If we start from 1, so 1. Let's change the ink. It becomes quite boring. One 0 1 3 1 2 3 4 1 0. That's it. And can you see that now rest of the thing, when we will multiply by 0, everything will be 0. So the only determinant which will be left is by multiplying 1. So you can solve this. It's very easy. So we can expand this from the first row. So it will be like 0 multiplied by 2 into 0 is 0 minus 3. It's again 0 plus 1 into 1 minus 4 3s are 12. 1 into 0 is again 0. 0 minus 12. And this here it will be not plus, it will be minus, plus, and 3 multiplied by 1 minus 8. So it all becomes plus 12 and minus 8 3 is 24. It is minus 12. Great. So the next funda we are having is definition plus rules. So as you can see, the first rule, you can see in the first rule that number of rows is equal to number of columns for a determinant. That's why the shape of determinant is square, right? Number of rows are equal to number of columns.
and every location has I comma j coordinates. So let's fill this determinant I comma j coordinates, in which the I is the row, j is the column. I is the row and j is the column. So suppose the name of elements are A, A, right? So the row number is 1, element number is 1, row number is, let's zoom in, row number is 1, element number is 2, row number is 1, element number is 3, row number is 2, element number 1, 2, 2, 2, 3. Here it will be 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3. Simple. Moving forward. Now, what's next? After hiding the rows and column of one element, okay, after hiding rows and column of one element, the smaller determinant obtained is called minor. It is denoted by Mij. What is trying to say? Suppose I am writing determinant. Let's make it more difficult by taking it 4 cross 4. 3, 6, 4, 2, 5, 7, 3, 9, 1, 2, 4, 3, 1, 0, 3, 7. Right? So so tell me that what is A23? So we have to find the second row, the third element of second row, that is 3. Now tell me M23. What will be M23? So we have to hide the row and column of 3. So it will be 3, 6, 2. This is M23. 1, 2, 3, 1, 0, 7. That's simple. Let me highlight this. This is this. Right? Moving forward. Then the plus or negative sign used are called accompanying sign of an element. It is denoted by Sij. So the plus and minus sign that I have been teaching you here, this is known as the accompanying sign, and it is denoted by Sij, and we have formula -1 I plus j. So suppose I have to take out the accompanying sign. I have to find accompanying sign of S23 from this determinant only. What is S23? It is 3. Let's find the sign of 3. So it is -1, 2 plus 3, -1 to the power 5, it is -1. And yes, it is minus. You can minus plus minus plus minus plus plus minus plus minus plus minus. It is minus. Now, cofactor, very important. Cofactor of any element is the product of Sij and Mij. That is product of its accompanying sign and minor determinant. So it is -1 I plus j into Mij. To check that all we have learnt is correct, let's solve a question. So we have been given a determinant, and we have to find the determinant, the value determinant A11, A22, A33, M11, M22, M33, M32, C32, and then sigma 3r is equals to 1 A1r, M1r, sigma r is equals to 1 A1r, C1r, sigma r is equals to 1 3 A2r, CR2. It's very simple. So let's solve the first one. So it will be very simple that 1, first and check how much space is left with us. Oh, we have full page. 1,
multiplied by 7002 and minus 2. We can write directly now, we have learnt. So we will be breaking from this row. So let me highlight this row. This is the row. So 1 multiplied by 7 into 2 minus 0, great, minus 2 into 3 into 2 minus 0. Then we have plus 1 into, it's 3 into 0 minus 7 into 0. So it is 14 and minus 12 plus 0, it's 2. So is equals to, this is D. Second part, A11, A22. So let's find. So this is A11, this is A22, this is A33. So it is basically A11 plus A22 plus A33 is equals to 1 plus 7 plus 2, and that is 10. Great. Third is the, so basically we have to find this. Oh, we have to find just this and this. So we have to find minor determinant of 1 1, 2 2 and 3 3, and that is so this M11 is 1, M22 is 7 and M33 is 2. Let's find them. So we can write here also, or else we can write orally. So M11 is 1 1, so it is basically 14 minus 0, then minus 7. So we have to, this is 7, its row and its column. So that is simple. 1 multiplied by 2 minus 1 multiplied by 0, and the third one is M33. So we have to hide this. So that will be 2 multiplied by 7 minus 6. So it will be basically 14 minus again 14 and minus 1 and 1, and it will be plus 2. So it is 2 again. Right? Oh, we have to find the m, so we don't, there's no need to multiply them by we have find it by determinant. So it's very simple. Let me write in a beautiful way. देख लेना यार, बड़ी मेहनत से बनी है. माइनस
1 comma 1 multiplied by 2, so this will be 2 minus 0, and here it will be 7 or 6, 7 minus 6, 7 minus 6, so it will be 14 plus 2 plus 1 is equals to 17. Fourth part. What the hell is fourth? Fourth is M32 plus C32. So the second element of third row, that's 0. So its M32 will be hiding this and this. Shit. Hiding this and this and moving with this. So it will be 1 multiplied by 0 minus 1 multiplied by 3 plus cofactor will be minus 1, 5, and again it is same. 1 into 3, it will be 1 minus 2 plus minus 1 into minus 2, so it will be minus 1 plus 2 equals to 1. 1 is the answer. One is the answer. One into 0. This is 2. Oh, it is minus. It is also minus 2. And this is plus 2. This is plus 2. So it will be 0. So we can write here that minor modulus of minor magnitude is equals to magnitude is cofactor. Done. Moving forward. Fifth question. Fifth is sigma A1R M1R. So I can write directly, and it will be like A1 M1 plus A2 M2 plus A12 M12 plus A13 M13. It will be like 1 into what color? It will be 1 into 7002 plus 2 into 3002 plus 1 into 3700. Great. So it will be around 14. It will be around 14 plus 12 is equals to 26. Sixth question. Sixth is A1R C1R. So it will be A12 C12 plus A11 C11, then A12 C12 plus A13 C13. So it's very simple. We have M of all three elements. Now we just have to multiply by their Sij. So it is quite simple. So this will be 1 into 14, and 1 plus 2 is 3, so minus 1 plus
2 plus 1 is 3 again. 1 plus 1 is 2, so it will be plus 1, so it will be minus 1 into 6 into 2 again, and here it will be 3 plus 1 is again 4, so it will be plus 1 multiplied by 1, and again it is 0, completely 0, so it will be 14 minus 12 is equals to 2 is equals to, this is D, 7th, and the last it is it will be A12 C12 plus A22 C22 plus A32 C32. Quite simple. Okay, so you can solve it. It's very simple. The only difference between them is this number. Now it will be dealing in the second column, right? So the second element of first row, second element of first row, second element of second row, second element of third row, it's basically moving in the rows, so you can solve it very easily. Let me give you a hint also. The A12 is 2 multiplied by C12, and it will be minus 1, and we have to hide this. It will be 3002 plus A22 is 7, and it will be 2 plus 2 1 multiplied by, what is it? It will be 1102, then plus A32, that will be minus 1 into, and what is A32? 0. Baat hi khatam. So you can solve it very easily. Now, and this I have to tell you a very important thing. This is called T race. Where is the third one? This is called the this is called the T race. And this thing, let me make a dotted line. This is diagonal. Move forward. So for a determinant, order means number of rows or number of columns. So determinant के लिए basically क्या है कि उसका number of row, number of columns का order, अगर 3 row है 3 column है तो 3 cross 3, बात खत्म. Sum of diagonal is called T race. I have told you. The determinant value D. Now this, if you multiply the element by its cofactor, then this will be equal to its determinant, right? Now we have to solve this question. Let's solve this. It is quite simple. We can solve it by 0 minus sine alpha cos alpha sine beta right. The first one will be all 0. Second we have taken sine alpha, so it will be sine alpha. We have taken this, so it will be sine beta into cos beta, that is, they will be positive, and done, and minus cos alpha minus plus होना चाहिए ना. So we have taken cos alpha, so we have taken this row to break it. It will be like this, and this. Quite simple. So it will be cos alpha into minus sine alpha will be 0, sine alpha into sine beta basically.
into minus sine beta. That's it. So it will be 0 minus sine alpha into cos alpha into sine beta. It will be plus cos alpha into sine alpha sine beta. That's great. The value is 0. Now what is funda number 6? It is that, now you can see 5 5 6 6 4 4. Let me make this by dotted line. You can see the symmetry 5 5 6 6 4 4. So this is basically known as symmetric. What exactly happens in symmetric? That is, Aij is equal to Aj, or you can say A23 is equals to A32. Then you can write here x, y, z, right? So when we have when we have when we have elements symmetric but with opposite signs, that is known as skew symmetric. That is known as skew symmetric. Known as skew symmetric. It is basically Aij is equal to minus of Aj. You can also say A23 is equals to minus of A23. So you can write here that if an element is skew symmetric, then diagonal elements are 0. The diagonal elements are 0. Why? Because here I have written that Aij is equal to minus of Aj. That means I can write Aij plus Aj is equals to 0, isn't it? And right, and this means Aij that this means that J is equals to I. J is equals to I, so I can write as Aii plus Aii is equals to 0. It is 2Aii is equals to 0. So Aii is equals to 0. Next, funda number 8. If D is skew symmetric, then if the order is odd, D is equals to 0. Order is even, then the elements will be a perfect square. Suppose the elements can be 4, 9, 16, 25, like that. But if it's odd, the determinant is equal to 0. F9. If two determinants are equal, then their values are equal order. Corresponding elements don't matter. If two matrices are equal, then every corresponding element must match. ये अभी आप छोड़ देंगे तो काफ़ी रहेगा. ये देखते हैं F9. That is basically like A part. If I write like this, x13 20x 435 equals 213 202 435. Understand? So in determinants, it is not at all eligible, or it is not at all that here x will be equal to 2. It is not at all necessary that x will be equal to 2. It can be
x is equals to 2 is one of the solution. X equal to 2 is one of the solution, but not all. Whereas in matrices, x13, x13, 20x, 435, in this two one three 202 435. Here x is equals to 2. Now funda number 10. Matrix will not allow to change its order. If a matrix has order 3 to 4, then its order cannot be changed. So it is basically saying that if this matrix is 3 cross 3, it cannot be changed to 2 cross 2, 4 cross 2, anything. But determinant can allow to change its order. How? Suppose I have determinant. I have a determinant like this, 3045. I can write this as 100 030 045, or else I can write it as 1000 1000 000 3045 0. This all is equals to 15. It can allow to change its order. Next, a determinant is always n cross n, and matrices can be m cross n. Determinant is always square, as I have told, and matrix can be a rectangle. A matrix which has m is equals to 1 is called a square matrix. Okay, only a square matrix has a corresponding determinant. What it is saying, that if a matrix A is equal to 1 6 4 7, then only, if it is square, then only it will be determinant A is equals to, but if it's rectangle, it's m cross n, then it is not applicable. Next question. If the ABC find the number of real roots of the equation, it's quite simple. So let's expand. First I have to check the space. Oh, let's expand. So around x, so it will be x a minus a x, right? Then minus c, it will be minus c a b x, then minus b minus c x minus c x b minus a. So here it will be x into x square plus a square minus c cx minus ab minus b into ac minus xb is equals to 0, and x cube plus a square x plus c square x plus abc minus abc plus xb square is equals to 0. ABC cancel,
x into x square plus a square plus b square plus c square is equals to 0, x is equals 0. Can I change the ink? Let's check. No. Now we have some special determinants. So it is like A, H, G, H, B, F. So basically we have these three elements in symmetry with these three elements. It will be equal to ABC plus 2FGH minus A square minus BG square minus CH square. If we want the proof, expand this column and this determinant. So let's solve this question on the basis of this determinant. So as you can see, 3 to 1, 3 to 1 and 3 to 1, 3 to 1, they all are symmetric, so we can apply this determinant and we have to find the value of x. Let's find. So simply apply the formula ABC. So it is basically 4x square. Okay, 4x square. ABC is 4x square. Then we have 2FGH, and 2FGH is 3 into 2 6, it is plus 12, minus AF square, that is x into 1 minus x square minus x. Then we have minus BG square, 4 into 2 square minus 16. Then we have minus CH square, and that is x into 3 CH minus 9x is equals to, here x is 4, so we can write 64, and then it's 2FGH, it is plus 12, and then minus x, that is minus 4, minus 16, and 9 into 4 minus 36. This will be 20. This will be 4x square, or 4x square minus 4 minus 10x, it will be basically 4x square minus 10x minus 24 is equals to 0. So it will be 2x square minus 5x minus 12 is equals to 0. So you can solve this equation. Next, if d is equals to 1, this determinant, okay, and x not equals to 0, then d is, we have these options. So basically we have to solve this determinant. Then also we have ABC, and this symmetrical GF and HGF. So we can write it as 1 into 1 plus x into 1 plus y plus 2 minus 1 into 1 square minus 1 into 1 plus x 1 power 2 minus 1 plus y 1 square. It will be something around 1 plus x plus y plus xy plus 2 minus 1 minus 1 minus x minus 1 minus y. Everything will be cancelled. Only thing that will left is xy. So divisible by x and y.
So option A. Next, determinant 2. So we have been given a determinant, and then and this. So if you want to prove it, the method one is expand, and second method is use some properties, and this property should be only used when the expression is lengthy. So let's understand the property. That is a funda number 12. That is, if we interchange any two rows, the new determinant becomes negative of original. Let's understand it. We are saying that suppose there is a determinant D. How much space we have? Plenty of space. Right? A, B, C. P, Q, R, S, T, U. Then we have written this as plus A and then some quantity, then plus C. We can write like this. Now if we interchange it, if we take this row above and this row downwards, let me make it by dotted line. If we take it here and take it there, it will be minus D equals PQR ABC STU is equals to minus A plus B minus C. Right? Done. And we can understand, like we have studied earlier, that when we have written like this, when we have written earlier that A, B, C, P, Q, R, S, T, U is equals to A multiplied by let me make the structures. QR TU minus B PR SU plus C PQ ST. We have written like this earlier. So then we have to change, like R1 interchange R3. R3, like we have to take this to the top and this to the down. It's a long stretch. See, then I have to take this to the down and this to the top. Then it will be S T U P Q R A B C. T U Q R
then minus b plus c, and then we will make the determinant structure, and then we will write here s u p r s t p q. Now you will say that why the signs are not changed here, because first step minus sign, okay, second step minus minus becomes plus, minus minus sign becomes plus, that's why. Next, if all elements are reflected about the diagonal, the new determinant is called the transpose of original value does not, and the value does not change. So what is trying to say? When I make a determinant, suppose it be 1 2 3 4 5 6 7 8 9, and I made a new determinant which is like 1 5 9 6 8 3 7 4 2, then this is called this is transpose, and it is equal to d transpose. Second, if two rows or columns are same, the value determinant is 0. This means this is what, if a determinant is 1 4 6 1 4 6 2 3 7, and so as its rows are same, so it will be equal to 0. Next, a beautiful question. We have a huge space for it, that's good. So if you see it, this is the question, that sigma r equal to 1, three a1 comma r c1 comma r plus three a r comma 3 c r comma 3 plus r equal to 1 3 a2 r c1 r sigma r equal to 1 3 a2 comma r c2 comma r. This is, so if you have your eyes open, then you can see that this is d, this is d, this is d. Why? Because it is multiplied by the elements of its own column, own row. So we can understand from here what, if you have your eyes open, then we can understand that these three are d, and this sigma r equal to 1 3 a2 comma r c1 comma r a2 comma r c1 comma r, this is different, so we have to deal with it. So how we will deal? So it is basically
a 2 comma 1 c 1 comma 1 plus a 2 comma 2 c 1 comma 2 plus a 2 comma 3 c 1 comma 3. Okay, this is it. So if I take the determinant that is given to us, that is 432 and 157 and 623, so it is like 4 multiplied by 5723, then minus 3 1 comma 7 6 comma 3, then plus 2, then we have 1562. Now suppose this is D. Now I write another determinant W, right? That W is basically in accordance with what we have given in the equation. We have been given that A2, and that is 157, this is 157, this is 623, and now this is equal to 0. That means this is equal to 0. That means this equation is 0. So what we are left with? We are left with D plus D by D is equals to 2D by D 2. Next, if any row or column are multiplied by their cofactors and added, we get determinants. However, if those elements are multiplied by their cofactors of any row, then the answer is 0, like what we have seen here. Basically, if any row or column are multiplied by their cofactors and added, we get determinants, we get D. If they are multiplied by their the cofactor multiplied by their column or multiplied or row, but if they are multiplied by any other row or column, then the answer is 0. Next, if we put x is equals to a in the determinant, answer is 0, right? If we put x is equals to a and answer is 0, then x minus a is a factor of that determinant. Let's see how. One plus x 1 plus y. ठीक है. So we have said put x is equals to a. So let's put x is equals to 0. It will become 1 plus y. That means this is 0. You can solve it. If we put y is equals to 0, that means 1 plus x 1 this is 0. What it means? This means that x minus 0 and y minus 0 are factors of this determinant. Clear? Now let's make the proof of determinant 2 that we were starting off. So let's write the determinant first. We have enough space.
1 1 1 a b c a square b square c square, right? So here to let's move with factor theorem. Factor theorem. Put a equal to b. If a equal to b, then it will be 1 1 1 1 1 अरे 1 bb 1 bb square 1 c square is equals to 0. Why? Because these two are same. So that means a minus b is a factor. Similarly, b minus c and c minus a will be the factor, Now, so we have got one a b c a square b square c square, they are equal to a minus b, b minus c, c minus a, and this is, so it is 3 degree. It is 3 degree in a comma b comma c. Clearly a minus b, b minus c, c minus a is also 3 degree. My neck is paining a lot. So no more factor. So now no more factor containing a comma b comma c. You may ask, but we can have alpha as numerical factor. How to deal with it? It's very simple. One a square, one b square, one c square, lambda c minus a. It is independent of a comma b comma c. So put a simple तुक्का मार दे यार. C is equals to 2. Real quick. Be quick. It will be 1 0 0 1 1 1 1 2 4. It will be lambda multiplied by minus 1 2. So it will be 2 lambda. 2 is equals to 2 lambda. Lambda is equals to 1. Next. So we can prove it by solution is factor theorem.
put A is equals to B, determinant will be 0, so A minus B is factor. Now, very important point coming from cyclic determinant. Cyclic. What is cyclic? It means that if you put A is equals to B, B is equals to C, and C is equals to 8, the expression will remain same. There will be no change. Similarly, there is cyclic determinant. What is cyclic determinant? If we put A is equals to B, B is equals to C, C is equals to A, there will be no change in the answer of determinant. So we can say that they are same. They are same. R1 interchanges to R2. R2 interchanges to R3, and that is cyclic. Their expansion is also cyclic. Done. So if A minus B is a factor, B minus C and C minus A automatically will be the factor. So now cyclic determinant has factors in cyclic groups. A plus B plus C, it is a factor in degree 1 factor. K into A square plus B square plus C square is a factor in 2 degree. This is factor in 3 degree. Now determinant 3, special determinants, and these all are cyclic. Quick. So we have to check first, is it cyclic? Answer is yes. B. A is equals to B डालने पर जीरो आ रहा है, उसका भी आंसर है यस, आ रहा है. इसका मतलब है सो A minus B, so A minus B, B minus C, C minus A are sure the factors. It is a 4 degree determinant. So 1 degree determinant will be multiplied. Boom. So the final answer will come out to be A minus B, B minus C, C minus A, and K into A plus B plus C.
You can find k by putting a is equal as k is independent of a, b and c. You can आप तो कम आ सकते हैं. You can put a is equals to 1, b is equals to 0, c is equals to 2, and you can find the value of k. It's very simple. Now factorize. Again the same process will go on. Is it cyclic? Cyclic? Yes. B. A इक्वल टू बी डालने पर क्या डिटर्मिनेंट 0 हो रहा है? 0 हो रहा है? Yes. Then A minus B, B minus C, C minus A are surely factors. As it is 5 degree, 2 degree factor will be multiplied. So answer will be A minus B, B minus C. It will be a long answer. A minus B, B minus C, C minus A, K into A square plus B square plus C square plus M into AB plus BC plus CA. Funda number 14. If ratios of elements of two columns is constant as we move here it will be rows. If the ratio of elements of two rows is constant as we move in this direction, or if the ratio of elements of two columns is constant as we move in down direction, the determinant is 0. What it's trying to say is that six 67 440 root 2 880 pi is equals to 660. As you can see, the ratios are same, 1 by 10, 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 1 by 10. It is 648 7 root 2 pi by 0. Then C part. If a number key is multiplied to a determinant, then it gets multiplied to a single row or column. Like अगर हम ऐसा कहना चाह रहे हैं कि अगर ऐसा हो कि जैसे मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़े 3 किसके साथ, 428 781 4511, so it will be like 428 781 12 15 33 is equals to one more
4 6 8 7 9 1 4 15 11. Next funda. This is a plus b plus c plus r अल्फा बीटा आर एक्स. अगर ऐसा कुछ हो तो ये ब्रेक हो जाएगा ए बी सी अल्फा बीटा आर एक्स गामा जेड प्लस पी क्यू आर अल्फा बीटा आर एक्स गामा जेड में ये हो जाएगा ब्रेक. अगर ऐसी एडिशन हुई तो इसका मतलब, और अगर ये आपको पता ही, अगर हम ब्रेक करेंगे तो ये यहाँ पे प्लस बी होगा, यहाँ बी प्लस क्यू होगा, यहाँ पे सी प्लस आर होगा. मतलब ये कहना क्या चाह रहा है सिंपली कि अगर मान लीजिए मेरे पास से कुछ डिटर्मिनेंट्स आ गए हैं और ये और ये कुछ अलग है, प्लस ये ऐसे है, तो इसका सिर्फ एक मतलब है कि जो डिफरेंट है वो हो जाएंगे ऐड. इसको हम रूल्स बना के भी लिख सकते हैं. रूल्स बाकी सब आइडेंटिकल होना चाहिए. नंबर 1. नंबर 2, सिर्फ डिफरेंट वाली रो या कॉलम ऐड होगी. now we have to prove. We have to prove this. It's very simple. We can do it very easily. हमें करना ही कुछ नहीं है, बस खाली हाँ इसको सिंपली ऐसे लो और तोड़ दो. 1a स्क्वायर 1b स्क्वायर 1c स्क्वायर. अगले बाजू में भी ऐसा कर दो, प्लस 1 1 1 a b c 2a क्यूब 2b क्यूब 2c क्यूब. तो ये कुछ बन गया, ये हो गया d, ये हो गया 2d. ठीक है. और जब आप इसको ब्रेक करोगे, और ऐड करोगे तो ये आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट, इवैल्यूएट. बड़ा आसान है. इट्स वेरी सिंपल. आपको पता ही चल गया होगा मैं क्या करने वाला हूँ, तो बड़ी आसानी से ये काम आप भी शुरू कर दीजिए. इसको करिए जूम और लिखना स्टार्ट करिए. ये हो जाएगा x y z w m w m z m y और m x. उसका हो जाएगा 3a फास्ट, 3b 3a 3b 3c 3d d स्क्वायर c स्क्वायर b स्क्वायर a स्क्वायर. प्लस x y z w n d n c n b n a 3a 3b 3c 3d
ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर और कट मारा, ये लचीला काय हो गया। हो गया। तो क्या आपको दिख रहा है, क्या आपको दिख रहा है कि जब मैं ऐसे आऊँगा, जब मैं ऐसे आऊँगा ओ आई मीन जब मैं ऐसे आऊँगा और यहाँ जब मैं ऐसे आऊँगा तो मैं देख सकता हूँ कि ratios are same, so d is equals to 0। नेक्स्ट, अब ये काफ़ी गंभीर सवाल है। कैसे गंभीर सवाल है, अब आप इसको ज़रा ध्यान से गौर फरमाइएगा कि जैसे जब मैं एक को ब्रेक कर रहा हूँ, जैसे मैंने ये a1 हो गया, ये b1 हो गया, ये c1 हो गया, और इसी तरह यहाँ पे दो एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक उसी तरह जब मैं ऐड करूँगा एक और, तो वो x1 आएगा, y1 आएगा, z1 आएगा, दो आएंगे। मतलब आप ये समझ लीजिए कि मेरा एक से दो आएंगे, उन दो से फिर दो आएंगे, फिर जिन से फिर दो आएंगे, मतलब टोटल 8 ब्रेकडाउन्स होंगे। नेक्स्ट, फंडा नंबर 16, एडिशन ऑफ डिटरमिनेंट इज डिफरेंट देन एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। ये तो मैं आपको पढ़ाऊंगा कैसे डिफरेंस होगा ना। अब आ गया एलिमेंट्री रो कॉलम ऑपरेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो इसको बड़े ध्यान से समझो। अगर मान लो मेरे एक रो नंबर 2 है, उसको मुझे ना बदलना है, उसका मुझे अपीयरेंस क्वेश्चन के साथ ठीक नहीं लग रहा है, मुझे बदलना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा R2, या R2 आना ज़रूरी है, प्लस जो मुझे उसमें ऐड करना है मैं वो ऐड कर दूँगा, लेकिन पहले R2 आएगा। इससे क्या होगा, वैल्यू चेंज नहीं होगी, आपका क्वेश्चन और आसान हो जाएगा। मुझे कॉलम में भी कर सकता हूँ मैं, ये मेरा कॉलम है, तो ये मेरा कॉलम आ गया। कॉलम 3 पहले ये लिखना है जो आपको चेंज करना है, उसके बाद जो आपको उसमें चेंज करना है वो आप यहाँ लिख देंगे। इससे कुछ रूल्स है वो मैं आपको समझाता हूँ। पहला रूल RN, कि RN तो अगर आपको जिसको चेंज करना है वो पहले आएगा ही आएगा, उसके बाद जो आप उसके अंदर चेंज करना चाहते हैं वो आपको लिखना होगा। बात समझ में आई। और जहाँ तक मैं आपको बता दूँ कि इन दोनों का सदैव कोएफिशिएंट वन रहेगा, और ये है हमारे चेंजेस टू बी डन। सपोज मेरे पास एक डिटरमिनेंट आ गया, एग्जांपल लेना, मेरी आदत है, XYZ नाम का उसका पहला रो है, PQR नाम का उसका अगला रो है, साथ ही साथ उसका ABC नाम का अगला रो है। बहुत देखो, अब जैसा यहाँ लिखा मैं वैसा ही करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा XP, चलो मैं N को ले लेता हूँ 3, M को 1, और M को 2, M को लेते हैं 2, P को लेते हैं 1। तो मेरा तीसरे रो में क्या कह रहा है, तो ये हो जाएगा
मुझे तीसरा रो चेंज करना है, तो मतलब ये हो जाएगा a प्लस 3p माइनस एक्स, देखो y q b प्लस 3q माइनस वाई, z r c प्लस 3r माइनस 2। उसके बाद प्रूव दैट, हमें कोई प्रूफ करना है, खटाखट प्रूफ हो जाएगा ये। तो ये देखिए ये कैसे प्रूफ होगा, इसमें यहाँ पे हमारे पास b माइनस ए आ जाएगा कॉमन, ये हम ले लेंगे b माइनस ए कॉमन, तो ये हो जाएगा 1 0 1 a1c a स्क्वायर b प्लस ए सी स्क्वायर, r2 माइनस r2 माइनस r1, फिर हो गया r3 माइनस r1। उसके बाद हम इसको ब्रेक कर सकते हैं इसके अंदर, ये हो जाएगा 1 0 0 a 1 c माइनस ए स्क्वायर b प्लस ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू b माइनस ए सी प्लस ए माइनस b माइनस ए b माइनस ए सी माइनस ए सी माइनस बी। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं, ये एक एग्जांपल के तौर पे एक और लेना चाहेंगे। सपोज ये है मेरे पास 164204, एक किसी का मोबाइल नंबर नहीं है, 435271457 इज इक्वल्स टू, अब मुझे इसको छोटा करना है यार, ऐसा कैसे चलेगा, तो जाएगा 443 4 5 52 4 1 71 7। यहाँ क्या किया मैंने, तो मैं लिखूँगा, मैंने यहाँ पे किया R1 माइनस 40 R3 इज इक्वल्स टू 4 4 1 3 2 1 4 5 7। बेसिकली हमने उसे क्या है, छोटा किया है, हो जाएगा R2 माइनस 10 R2। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आते हैं सम स्पेशल डिटर्मिनेंट्स। तो पहला D1 हम कर चुके हैं, ये हम कर चुके हैं, हम ये भी कर चुके हैं। D3 का प्रूफ निकालते हैं। ये है 1 1 1 ABC BC CA AB, जिसका वैल्यू आ रहा है A माइनस B माइनस C C माइनस A, जा रहा है, बेहद आ रहा है, बहुत अच्छे। अब हम इसे करेंगे प्रूफ। तो बड़ा आसान प्रूफ है, बड़ा आसान है, आपको कुछ नहीं करना है इसके अंदर। ये लीजिए और इसमें से 1 बाय ए बाहर निकालना शुरू करिए, 1 बाय ए फर्स्ट रो में से बाहर निकालना शुरू करिए, फर्स्ट रो में से 1 बाय ए बाहर निकालना शुरू करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर ABC, बिल्कुल हो जाएगा। फिर सेकंड रो से 1 बाय बी निकालना शुरू करिए, ये हो जाएगा बी स्क्वायर ABC। फिर मैं कहता हूँ जी थर्ड रो से 1 बाय सी निकालना शुरू करिए, ये हो जाएगा सी स्क्वायर ABC। ठीक है, यही चीज़ आपकी बराबर हो जाएगी। अब आप मेरे हिसाब से आप ABC बाहर निकाल लीजिए। जिस वक्त आपने ABC बाहर निकाल दिया तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर 1 बी स्क्वायर 1 सी स्क्वायर 1। मेरे हिसाब से आपकी आंखें अब खुल गई होंगी।
तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी सी बटा ए बी सी ए बी सी बटा ए बी सी। तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब पूछेंगे डायरेक्ट कैसे लिख दिया आपने, आपने वो कहाँ किया है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सी, इसमें हम करेंगे रो कॉलम ऑपरेशन, रो ऑपरेशन करने वाले हैं बेसिकली। तो यहाँ पे होगा हमारे पास C1 इंटरचेंज होगा C3 में, C2 इंटरचेंज होगा C1 में। अगला D4 ABC BCA CA और ये इसका A इंटू बी सी माइनस ए स्क्वायर माइनस B इंटू बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस C इंटू ए बी माइनस सी स्क्वायर। अब हम इसका प्रूफ करते हैं, बहुत आसान है। क्या है ये, तो ध्यान से देखेंगे, अगर हम इसको खोलेंगे, अगर हम इसको खोलते हैं तो ये हमारा बन जाता है, ये क्या बन जाएगा हमारा, ये हमारा बन जाएगा 3ABC माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, ये बन जाएगा, ये हमको बन जाएगा। हमने पढ़ रखा है जब हम छोटे थे, अकल से कच्चे थे, हमने पढ़ रखा है कि ए क्यूब प्लस बी, थोड़ा बड़ा है, कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी के, तथा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये होता है, अवश्य होता है। अब हम ये निकालेंगे कैसे, बड़ा आसान है, बड़ा आसान। आप इसी डिटर्मिनेंट में C1 को लगा दीजिए, C1 प्लस C2 प्लस C3, तो ये हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी प्लस ए, सी प्लस ए प्लस बी। सुन रहे हैं, सुनिए, अथवा बहुत पिटेंगे। बी सी सी ए बी, बहुत शानदार। देखिए हमारा ए बी सी आ जाएगा बाहर, ए प्लस बी प्लस सी बाहर आ जाएगा, तथा ये 1 1 1 बी सी ए और ए बी सी रह जाएगा अंदर। जब आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, आपके पास, मैं क्या कहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, 1 लाख की बात कहने जा रहा हूँ। जब आप इसको सॉल्व करिएगा, जब आप इस कमबख्त को सॉल्व करिएगा तो आपके पास ये आ जाएगा। मैजिक है ये, करके देखिएगा स्वयं। सब कुछ हम ही करने वाले, टाइम की है कमी। आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर डी, ये हम कर चुके हैं, ऊपर जाके देखिए। 6ठा नंबर डी, इसका प्रूफ करते हैं। ये है 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, और जिसके आपके सामने इसका लिखा हुआ एक्सपेंशन ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए के इंटू इसका प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एम इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। आइए इसका करते हैं ऑपरेशन। तो देखिए इसमें हम करने वाले हैं R3 माइनस, मतलब R3 माइनस R1, कन्वर्टेबल है भैया। तो ये जब हम करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा 1, लगता है एक ऊपर से चढ़ाते हैं, अरे अरे ये हो जाएगा 1 1 0 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी क्यूब माइनस ए क्यूब सी क्यूब ए क्यूब इज इक्वल टू 1 0 0 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस ए क्यूब। अब आप पूछेंगे ये क्या है, देखिए ये बड़ा आसान है,
ये है R3 कन्वर्ट्स टू R3 माइनस R1, ठीक है। अब इसमें से आप B माइनस सी और C माइनस ए को बाहर लीजिए। B माइनस सी और C माइनस ए जब बाहर आ जाएगा तो अंदर रह जाएगा 1000 ए स्क्वायर B प्लस C प्लस ए क्यूब B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी ए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा इसके अंदर। बात खत्म। आगे बढ़ते हैं। D7 में आपको वही काम करना है जो अभी हमने D3 में किया है, D3 में किया है, वही काम करना है। सिंपल 1/ABC बाहर निकालिए आराम से। थोड़ा इंक चेंज कर लेते हैं, बड़े आराम से इसको निकालिए बाहर। जूम करेंगे जगह की कमी। 1/ABC लिखिए, अंदर लगाइए डिटर्मिनेंट, उसके अंदर करिए फिलिंग। किसकी करेंगे फिलिंग? हम करेंगे ABC C क्यूब B क्यूब A क्यूब ABC। बस अच्छे बच्चों की तरह ABC निकालिए बाहर। ABC ये हो जाएगा ABC बटा ABC, ये हो जाएगा 1। ये हो जाएगा A क्यूब 1 B क्यूब 1 C क्यूब 1। थोड़ी सी अगर बुद्धि दौड़ाएंगे इसको हम फिर लिख सकता हूँ 1 1 1 ABC A क्यूब B क्यूब C क्यूब। अभी किसके बराबर आ गया है अंदाज़ा लगाइए, और ये बराबर आ चुका है हमारे D5 के। किसके बराबर आ चुका है? D5। D8 सेम काम करिए, बिल्कुल सेम काम। अब मैं डायरेक्ट करने वाला हूँ ये काम। 1/ABC यहाँ लिखिए, ठीक है। कर ही देता हूँ, छोड़िए। A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर C क्यूब B क्यूब A क्यूब ABC इज इक्वल टू, अब ABC बाई ABC कट जाएंगे, अंदर रह जाएंगे हमारे पास 1 1 1 A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर A क्यूब B क्यूब C क्यूब, और ये है हमारे पास D6। D9 अब होगा डायरेक्ट गेम। D9 हम खेलेंगे डायरेक्ट ABC बाई ABC लिखा, और A1 A4 B1 B4 C1 C4, और ये हम माइनस हो जाएगा क्योंकि हमें सिर्फ एक ही शिफ्ट करना है। तो 1 1 1 ABC A4 B4 C4, और ये हमारे पास आ जाएगा -D10 के। ज़रा ध्यान से देखिए, और D10 यहाँ लिखा हुआ है। बात खत्म। D11 इसको एक्सपेंड कर लीजिए, D11 आ जाएगा। अब D12 आ चुका है। D12 बड़ा आसान।
D12 का बड़ा सन मैं कैसे बोल रहा हूँ, सीधे यहाँ पे लिखिए R1 माइनस R2 और काम शुरू करिए। ये हो जाएगा A माइनस बी, B माइनस ए, 0, B A B, B B A, बड़ी आसानी से। इज इक्वल्स टू A माइनस बी, B माइनस ए 0, A माइनस बी, B माइनस ए, B B A। ये कैसे हुआ, ये हुआ R2 R3। ये हो जाएगा A माइनस बी, C माइनस बी, 1 0 B माइनस 1 1 B 0 माइनस 1 B। तो ये हो जाएगा A माइनस बी स्क्वायर, A माइनस बी ऑफ, तो जाएगा A माइनस बी का होल स्क्वायर, A प्लस बी प्लस 1 इंटू बी। ये हो जाएगा A माइनस बी होल स्क्वायर और A प्लस R2B। अब ये बहुत मेन चीज़ आ रही है, ये मेरे पास f फंड नंबर 19 आप देख रहे होंगे, ये मेरे पास कुछ फंक्शन लिखे हुए हैं और मुझे इस फंक्शन का करना है dy dx, मुझे इसका करना है dy dx। आपको चीज़ समझ में आ रही होगी कि ये जो फंक्शंस हैं x में, इनके एक्सपेंशन भी x में ही होंगे। तो देखिए अगर मैं इसका dy dx करता हूँ, मैं इसको खोलूँगा तो कुछ आएगा एफ क्यू यू माइनस एफ आर टी, ऐसे करते 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 ये आएगा। हाँ बोलिए। हाँ, अब जो मेरा एक एफ क्यू यू है वो मेरा 3 में ब्रेक होगा। एफ डैश क्यू यू, एफ क्यू डैश यू और एफ क्यू यू डैश। ठीक है। सिमिलरली यहाँ जितने भी टर्म्स होंगे, यहाँ जितने भी टर्म्स होंगे वो सब 3-3 पार्ट में ब्रेक करेंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या आया, इसका मतलब आया ये सब है डेरिवेटिव ऑफ एफ क्यू यू। इसका मतलब हमारे सामने क्या आता है कि इफ नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल्स टू n, तो डेरिवेटिव्स इज इक्वल्स टू 3n। बात खत्म। अब ये हमारे पास है एफ जी एच, तो देखिए ये इसके अंदर ब्रेक हो जाएगा। जब मैं एक्सपांड करूँगा तो इसके अंदर ब्रेक होगा कि नहीं होगा। जब मैं इनके डेरिवेटिव लिखूंगा, जब मेरा एफ क्यू डब्ल्यू का डेरिवेटिव क्या आएगा, एफ डैश क्यू डब्ल्यू, एफ क्यू डैश डब्ल्यू, एफ क्यू डब्ल्यू डैश, ये आएगा। उसी के साथ जब मैं एफ आर वी का डेरिवेटिव खोलूँगा तो क्या आएगा, एफ डैश आर वी, एफ आर वी, एफ आर डैश वी और एफ आर वी डैश आएगा। सिमिलरली जी का भी आएगा, जी डैश पी डब्ल्यू, जी पी डैश डब्ल्यू और जी पी डब्ल्यू डैश आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? हाँ आएगा। अगर मैं फर्स्ट टर्म, ये क्या है, अगर मैं फर्स्ट टर्म को छांटता हूँ तो क्या होगा, ये एफ का आएगा क्यू और आर वी, एफ डैश क्यू और आर भी आएगा। उसी तरह जी का भी आएगा और एच का भी आएगा। तो ये मेरे पास ऐसे अगर मैं तीनों का निकालूंगा, तीनों का आ जाएगा। कोई समस्या नहीं। तो इसका हमारे पास मॉरल क्या बन के आता है, मॉरल देखिए ना इसको, यहाँ पे ये जी डैश है, ये जी डैश कैसे आएगा, जब मैं जी डैश खोल लूँगा ये, तो ये होगा जी डैश पी डब्ल्यू, जी पी डैश डब्ल्यू और जी पी डब्ल्यू डैश। ये हो जाएगा जी डैश यू आर, जी यू डैश आर
और जी यू आर डैश। तो बेसिकली जब मैं ये बना रहा हूँ जब मैं ये बना रहा हूँ तो मेरे पास मुझे सिर्फ जी डैश वाले चाहिए। जी डैश वाले क्या है मेरे पास, पी डब्ल्यू और यू आर, उसी से मैंने क्या बनाया, एफ डैश जी डैश एच डैश और पी क्यू आर यू वी डब्ल्यू। सिमिलरली जब मैं पी डैश वाले खोलूँगा, यू डैश वाले खोलूँगा और पी डैश इसके खोलूँगा यू डैश, तो मेरे पास ये बन जाएगा। यू वी डब्ल्यू खोलूँगा तो ये बन जाएगा। तो मॉरल मेरे पास क्या बन के आता है कि R1 R2 R3 is equals to R1 dash R2 dash R3 dash, oh sorry सब पे डैश नहीं लगेगा, प्लस R1 R2 dash R3 प्लस R1 R2 R3 डैश। फटाफट से क्वेश्चन ये निकालना है हमको। ये बड़ा आसान है। अगर मुझे फर्स्ट क्यू निकालना है तो याद रखिए कि क्यू जो होगा मेरा क्यू वो होगा मेरा डेल्टा ज़ीरो। अगर ये मेरा डिटरमिनेंट डेल्टा है तो ये होगा डेल्टा ज़ीरो, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या बन के आ जाएगा, ये मेरे पास कैसे बन के आ जाएगा, ये मेरा बन के आ जाएगा 0 0 2 1 0 0 0 1 0। तो मेरे पास क्यू की वैल्यू आ जाएगी 2। और अब जब मैं सेकंड जब मुझे p निकालना है p, तो p होगा मेरा डेल्टा डैश x और फिर डेल्टा डैश x में मैं पुट कर दूंगा डेल्टा ज़ीरो, डेल्टा डैश ज़ीरो, समझे। तो ये इसको फटाफट करते हैं। सबसे पहले होगा 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर x प्लस 2 2x प्लस 1 2x प्लस 1 x क्यूब x स्क्वायर 1 1 प्लस 8x। ये सारे डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं। पहले फर्स्ट रो होगी, उसके बाद सेकंड रो होगी बारी बारी से। तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x, दोबारा से अपने मूड में आ जाएगा x प्लस 1 x प्लस 4x क्यूब, ये हो जाएगा 2x 0 x प्लस 2 x स्क्वायर 0 3x स्क्वायर। प्लस ये ऐसे, ये ऊपर ऊपर के तो सेम रहेंगे और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 1 1 1 2x। कितनों को दिख रहा है कि ये तो हो जाएगा मेरा, ये तो हो जाएगा 0। इसको सॉल्व करने के बाद मेरा आंसर आ जाएगा 3। नेक्स्ट F20 डिटरमिनेंट एडिशन मल्टीप्लिकेशन कैन बी डन विदाउट प्रॉपर्टीज ऑल्सो। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कई बार हमें लगता है कि प्रॉपर्टी बेफालतू में लगा ज़रूरी नहीं, हम डायरेक्ट एक्सपैंड करेंगे ये आंसर निकल जाता है। जैसे बड़ा सिंपल है, एक छोटा सा एग्जांपल होता है। बड़ा छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ये 1 1 3 2 4 5 6 7 7 2 प्लस 1 3 2 6 2 0 7 7 2
इज इक्वल्स टू 132 1076 772 456। तो ये डायरेक्ट हमने ऐड कर दिया, कोई हमें प्रॉपर्टी लगाने की टेंशन नहीं करनी है। सब जैसे हम ये एग्जांपल लेते हैं, प्लस 620772, इसमें सब अलग है, तो यार एक्सपैंड कर दो, एक्सपैंड करने के बाद उसको ऐड कर दो, बात ख़त्म। आगे बढ़ते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंस आ गई डिटर्मिनेंट मल्टीप्लिकेशन। तो देखो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे ये मेरे पास दो डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई करने हैं, ठीक है, तो इसमें मैं इसको एक वेक्टर ले लूँगा, मैं इन तीनों को वेक्टर मान लूँगा, ठीक है, इन तीनों को मैं मान लूँगा वेक्टर, बड़े प्यार से वेक्टर मान लिया। और इन तीनों को मैं, इसको मैंने रो में वेक्टर मान लिया, इसको मैं कॉलम में वेक्टर मान लूँगा, इनको मैं वेक्टर मानूंगा कॉलम के अंदर, ठीक है, बड़ी प्यारी चीज़ है, ठीक है। अब इमेजिन ये एलिमेंट जो है मेरे वेक्टर फॉर्म में है, इमेजिन एलिमेंट्स आर इन वेक्टर फॉर्म। तो मतलब मेरा जो ए वेक्टर मेरे पास बन के आता है A1 आई कैप, A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। जो मेरे पास बी वेक्टर है वो सिमिलरली बन के आता है B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। सिमिलरली जब मेरा सी वेक्टर आता है तो वो जाता है मेरा C1 आई कैप, C2 जे कैप प्लस C3 के कैप। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी सिंपल। सिमिलरली जो मेरा PQR वेक्टर है, जो मेरे PQR वेक्टर है वो जाता है मेरा R1 आई कैप, R2 जे कैप, R3 के कैप। ये हो जाता है मेरा Q1 आई कैप, Q2 जे कैप, Q3 के कैप। ये हो जाता है मेरा P का हो जाता है P1 आई कैप, P2 जे कैप, P3 के कैप, ठीक है। अब जैसे मुझे इसका लिखना है प्रोडक्ट, मुझे लिखना है इसका फाइनल प्रोडक्ट लिखना है मेरे को, कैसे लिखूँगा। अब ये टोटल 9 है तो ये भी 9 ही होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब जैसे मुझे पहला का दूसरा निकालना है, पहला का दूसरा, तो जैसे मुझे ये पहला का दूसरा निकालना है तो इसमें मैं पहला का दूसरा लूँगा, यानी ए वेक्टर इन डॉट क्यू वेक्टर। सिमिलरली अगर मेरे को तीसरे का दूसरा निकालना है, मतलब दूसरे का तीसरा, यानी इसका मैं लूँगा दूसरा, इसका लूँगा तीसरा, तो ये हो जाएगा बी वेक्टर इंटू आर वेक्टर। सिमिलरली इसका मुझे तीसरे का दूसरा निकालना है तो ये हो जाएगा सी वेक्टर इंटू आर वेक्टर। सिमिलरली ये हो जाएगा ए वेक्टर इंटू पी वेक्टर। ये हो जाएगा ए वेक्टर और दूसरा, ये हो जाएगा बी वेक्टर का पहला पी वेक्टर, ये हो जाएगा तीसरा सी वेक्टर का पहला पी वेक्टर, तीसरे का तीसरा दूसरा ये क्यू वेक्टर बी क्यू वेक्टर ए आर वेक्टर, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे अब यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, इसका आंसर क्या आएगा। सपोज इसको मैंने मान लिया ऐसे, इसको मान लिया ऐसे, इसको मान लिया ऐसे, इसको मान लिया ऐसे, तो मतलब मुझे पहले यहाँ पे 4 आएंगे,
4 आएंगे। तो पहले का, हाँ 4 आएंगे। तो पहले का पहला यानी ए बी और पी आर, तो हो जाएगा ए पी प्लस बी आर। ये पहले का दूसरा हो जाएगा ए क्यू हाँ पहले का दूसरा तो ए क्यू प्लस बी एस। उसी तरीके से सी पी प्लस डी आर, सी क्यू प्लस डी एस। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा D13 आ गया है और ये हमारा है, ये क्वेश्चन है D13 के ऊपर। लेट्स सॉल्व इट, बड़ा आसान है। सिमिलर ये हमको x प्लस एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी दिया हुआ है, सी 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 और ए बी के फॉर्म में है। ये b है एक्चुअली, तो बस फॉर्मूला पुट कर देना है हमको। हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन 2x। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 4 साइन 2x। बड़ा आसान। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 6। क्यों? साइन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 1। अभी हमारे पास D14 आ गया। अल्फ़ा ए बी ए अल्फ़ा सी माइनस बी माइनस सी अल्फ़ा। इसका ब्रेकडाउन क्या होगा अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं। खाली याद करना, अगर आपको इस D14 और D13 को प्रूव करना है, ये सिंपली आपको एक्सपैंड करके होगा, बड़ा इजीली हो जाएगा। ये सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दिया हुआ है 1। बस हमें मल्टीप्लाई करना है अल्फ़ा। अल्फ़ा है हमारे पास 1, तो अल्फ़ा तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 हमको दिया हुआ है। बात ख़त्म। ये हमको बड़ा छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है। इफ़ 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस सी, हमें ये निकालना है। तो अल्फ़ा की पता है हमको वैल्यू की 1 आ गई। अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू ये म्यू, तो ये अल्फ़ा माइनस म्यू 0। डिटर्मिनेंट्स कंप्लीट होने के लिए सिर्फ एक क्वेश्चन रह गया है, देन डिटर्मिनेंट से मिल जाएगी छुट्टी। ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए ये इतना डिटर्मिनेंट है, तो ये एक बड़ा डिटर्मिनेंट हमारे सामने बैठ चुका है। अब बिग डिटर्मिनेंट, थोड़ा लाइट कलर, लास्ट क्वेश्चन देन आवर डिटर्मिनेंट विल बी ओवर। बिग डिटर्मिनेंट, बिग डिटर्मिनेंट है, ठीक है। तो हमको क्या करना चाहिए, वी शुड ट्राई टू स्प्लिट इन 2 factors, in 2 factors which are determinants। तो हमें कहीं ना कहीं फील आ रहा है कि मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में दिया हुआ है ना। तो जैसे कि अगर मैं लिखूं तो हम ये देख सकते हैं कि मेरा a1 x1 और b1 y1, इसको मैं उस पूरे लाइन में ब्रेक कर सकता हूँ a1 b1 और 0 में। फिर मैं कर सकता हूँ a2 b2 0 a3 b3 0। अब जब मैं इसमें क्या मल्टीप्लाई करूँगा, जब मेरे पास ये आएगा तो वो हो जाएगा मेरे पास x1 x2। बड़ा सिंपल, आप भी ट्राई करके देखिए। y1 y2 y3 1 1 1, ठीक है। यह हमारे पास आ गया। अब आप इसमें चेक कर लीजिए, मुझे a1 x1 b1 y1 निकालना है। तो a1, तो जब मैं ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो a1 x1 b1 y1, बात ख़त्म।
फिर मुझे चाहिए A1 x2 B1 y2 A1 x3 B1 y3 A2 x1 B2 y1। तो आप समझ रहे हैं कि ये हो गया, ये सबसे टफेस्ट क्वेश्चन था मल्टीप्लिकेशन का, और डिटर्मिनेंट हमारा हो चुका है ओवर। सो थैंक यू वेरी मच एंड मीट यू इन द नेक्स्ट लॉन्ग शॉर्ट वीडियो। बाय बाय, शब खैर। 1 सेकेंड, और मैं गैलरी से आता हूँ और यहाँ पे वीडियो तो नहीं है एंड